Good evening, everyone. Today we are going to start the next topic from chapter 13, that is magnetic effects of current. So in today's topic, we are going to discuss about the forces. So starting with the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. That is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. What does it mean? It means that when we place a current carrying conductor, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, राइट? तो फोर्स लगेगी तो उसका फोर्स का कोई ना कोई इफेक्ट भी विजिबल होगा उसमें, राइट? तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? एंड इट अप्लाइज द फोर्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल. तो एम्पियर ने सजेशन दिया, कहता अगर इसका रिवर्स भी ट्रू हो जाए, दैट मीन्स जो अगर मैग्नेट भी क्या करेगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, तो ये एक्सपेरिमेंटली ट्रू मिला. ओके, तो इसमें क्या किया गया, इसको बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट. एनसीईआरटी बुक में थोड़ा डिफरेंट है डायग्राम, मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा आपके लिए. तो इसमें क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक स्ट्रेट कंडक्टर था जिसको हमने हंग किया फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैंड. ये हमारा स्टैंड है, यहां से मैंने एक इस तरीके का कंडक्टर रेड कलर का हैंग किया. ओके, राइट. देन रखा कहाँ इसको, होर्सशू मैग्नेट के बीच. होर्सशू मैग्नेट इस तरीके की है हमारे पास, ये होर्सशू मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है इसको, राइट. और जो ये प्लेटफॉर्म था यहाँ पे, ये जो पोर्शन यहाँ पे टच हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी मरकुरी रखी हुई है यहाँ. ओके, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वायर है और इस प्लेट को हमने अटैच किया है बैटरी के साथ, राइट. और यहाँ पे हमने लगाई है की, which can be closed, which can be open. और यहाँ पे हमने फिक्स किया है रियोस्टेट, जिसको हम रोटेट करवा के फिक्स कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेरी करवा सकते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जो ये ज्वाइंट है उसका, ये जो ज्वाइंट है ये फ्लेक्सिबल है. तो क्या हुआ बेटा, व्हेन द की इज क्लोज्ड देन द करंट वाज सेट अप, राइट. जब की क्लोज की तो करंट वायर में फ्लो होना शुरू हुआ, तो वायर ने कहता स्विंग करना शुरू किया फॉरवर्ड, आगे की तरफ. तो करंट अगर डाउनवर्ड है तो वायर जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो स्विंग करने लगी, राइट. जिस वजह से क्या हुआ, इट कॉजेज द वायर टू लीव कांटेक्ट विद द मर्करी. तो ये जो वायर मर्करी के कांटेक्ट में है, बिकॉज इसके ऊपर फोर्स लगी तो इट विल मूव, तो ये इसने कांटेक्ट छोड़ा अपना मर्करी से. देन द सर्किट विल बी ब्रेकअप, तो उसने सर्किट को ब्रेक कर दिया. ओके, नाउ अब ग्रेविटी की वजह से व्हेन द वायर विल मूव बैकवर्ड, then it will again make the contact with the mercury and again the previous action will be repeated. When the reverse direction was taken for the battery, कि negative की जगह positive लगा दिया, then the direction of current also reverses. इस केस में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, राइट. अब करंट ऊपर की तरफ है, then the wire will swing backwards. तो सबसे पहले वो क्या होगी, डिटैच हो जाएगी मर्करी से, and again this will remain till the current is provided to the
सर्किट। तो ये प्रोसेस बार बार इसमें रिपीट होती है। बट व्हेन दिस वायर was placed parallel, now it's perpendicular, when it was placed parallel to this, like this, parallel रख दें इसको, then there was no force, कोई फोर्स उसने एक्सपीरियंस नहीं करी। उसमें क्या चीजें थी देखिए ध्यान से, दिस इज द मोशन, right, this is the motion and this is the current in the wire in the downward direction. When the current is in the downward direction, the motion will be in the forward direction, right? And this is our field. इस तरीके से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, right? So again I'm repeating, when the current was in the downward direction, then this wire moved in the forward direction, and when it moves in the forward direction, then it leaves the circuit, leaves the contact with the mercury, and the circuit breaks, and then the wire due to gravity will move or will swing backwards. Then again it will make the contact with the mercury, and this action will be repeated again and again, right? Now in class 10, what we have to do majorly in this case, we have to find out the direction of force. The direction of force क्या होगी? We are now already aware about there will be a force that can be found, find out by using Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule के साथ। तो Fleming's left hand rule क्या कहता है? When you stretch your thumb, forefinger and the middle finger, then your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. Then forefinger will tell us the direction of magnetic field. Direction of magnetic field, right? Middle finger will point in the direction of current. Right? And the thumb will point out in the direction of motion. It will tell the direction of motion. Direction of motion. Now how we can find out the magnitude? This is about the direction of force. We know that अगर force लग रही है तो उसका कोई magnitude भी होगा. So what will be the magnitude? The magnitude of force can be calculated because it depends upon the different factors. So what are these factors? We will discuss these one by one. That are the factors or the magnitude of the force. Magnitude of force. So what is the magnitude of force? First is current, obviously current I, that is I can write it, force is directly proportional to I. What does it mean? It means जितना ज़्यादा current उतनी ज़्यादा force, right? Then second is external magnetic field. External magnetic field, that is B, and F is directly proportional to B. जितनी ज़्यादा force, sorry, जितनी ज़्यादा magnetic field उतनी ज़्यादा force. Third is length of conductor. What I mean by this length of conductor, जितनी ज़्यादा length उतनी ज़्यादा force, right? And then last but not the least, the angle. Which angle? Angle between the magnetic field and direction of current. And direction of current. So that is theta. Right? So by combining all these equations, I will get the magnitude of the force. F is equal to V I L sin theta.
Dear children, this is very important formula. This is that formula by which we can find out the magnitude of the force on the conductor, current carrying conductor placed in a magnetic field. Right? Now, you must have seen, I said one thing, when this wire is placed parallel to magnetic field, अगर उसको magnetic field के parallel रख दोगे, then there will be no force. जब parallel रखेंगे तो बेटा theta will be 0. Theta 0, तो F is equal to BIL into sin 0. Sin 0 की value 0 होती है तो force will be 0. That means there will be no force. And when theta will be 90 degree, then the force will be maximum. Maximum force होती है. Right? This is all about the force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Now, same way we are having one more, that how we can calculate the force जब वो charge उसके अंदर move करेगा. Force on a moving charge. Force on moving charge in a magnetic field. So what does it mean? When a current carrying conductor placed in magnetic field, it experiences force. Same way when the moving charges are placed in or moving in an external magnetic field, then they will also experience force. That force, what I mean, this is the magnetic field B, right? और वो इस velocity से जा रहा है यहाँ पे V velocity से. This is the theta angle. This is charge Q, right? V velocity से this is magnetic field. Then force can be calculated by F is equal to BQV sin theta. In that case, Q is the charge, V is the velocity. If theta is 0, that means parallel move करेगा उसी axis पे, then the force will be 0. और theta 90 degree होगा तो force will be maximum. And similarly, if the charge will be at rest, so three cases are there. Theta is equal to 0 degree, F is 0. When theta is equal to 90 degree, F is maximum. And when V is 0, that means body is not in motion, then again F is 0. Right? Similarly, if one more I can add on, if Q is 0, F is 0. Uncharged जो particle होंगे उनके ऊपर कोई भी magnetic field force नहीं लगाएगी. This is the meaning of what I want to say. Right? So this is about the force on a moving charge in magnetic field. So next we have electric motor. So electric motor is what? Very important. As we all are having these motors at home, we have seen this motor. It's a device which converts electrical energy into mechanical energy. घर में होता है pump which we use to fill the water in the water tank which is placed at the top floor. Right? They use the electric current. They are used in the refrigerator, coolers, electric fans, mixers, so many things. On the basis of types of current, electric motors भी दो type की होती हैं. One is AC motor, one is DC motor. AC motor which works on the alternating current by the power supply, right? जैसे washing machines हो गई, fans हो गए, are AC motors. DC motors which work on the direct current, right? जो motor in a battery operated toy is a DC motor. जो हम toy लेके आते हैं जो cell से चलते हैं, बैटरी लगती है छोटी, वो हमारे DC motor होती है, right? So what is the principle of this electric motor? First of all, the principle is same, that when the current carrying conductor is placed in an external magnetic field, then it experiences a force and moves in the direction of force. तो direction of force हमने की है इसकी. So how the structure of this? In this one we have the armature coil, that is ABCD.
This is our armature coil. We can name it A, B, C, D. This is A, this is B, this is C, and this is D. Right? It is an insulated copper wire. Soft iron core के ऊपर पूरी तरह से रैप की होती है copper wire. Generally large number of turns होते हैं. Right? Single coil बजाने की बजाय large number of turns होते हैं. And it is placed in a strong magnetic field. You know that magnetic field के अंदर तो रखना ही पड़ेगा. This is north, this is south. Okay. Then we are having split rings and commutator. Split rings क्या होते हैं? These are the two halves of the copper rings, like this. One is this and one is like this. Okay, this is S1, this is S2. Here are two brushes attached to its surface. दोनों के साथ B2, and here we have B1, right? And they are attached like this, right? Brushes are there. So split rings क्या है? Two halves of copper ring होते हैं actually, which are attached to the axle. That is the axle, right? जो rotate करेगा. This one is axle. Brushes, outer sides of split rings हैं. They are attached with the two carbon brushes B1 and B2. ये जो brushes हैं, they are connect to the external battery of the commutator. बाहर से वो external battery के साथ attach. Battery तो आपको पता ही है. Now how it works? If I talk about the first rotation, in the first rotation, first जो rotation होगी वो भी half होगी. In the first rotation, that is half rotation. So dear children, first half rotation में क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना है. कहता है when the current is passed through the ABCD coil, ऐसे, like this, right? Now the current is passing with the help of battery. Then the coil will experience a force. How it will experience a force? चलिए हम देखते हैं. करंट की डायरेक्शन ये है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद कीजिए. Then this is the field, magnetic field, direction of magnetic field, and this is the force, right? What I mean, then the coil will experience a force. So current in the arm AB is from A to B, and the current in the arm CD is from C to D. So magnetic field is perpendicular to both AB and CD. दोनों में magnetic field perpendicular है. ये देखिए इस तरीके से है magnetic field, right? It is perpendicular to both AB and CD, north to south में. Then we will apply the Fleming's left hand rule. Then the direction of force on AB, अगर मैं AB की बात करूं, direction of force on AB is downward and on CD is upward. अगर यहाँ हम बनाते हैं, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन है. इस तरफ यहाँ हमने बनाई है करंट की डायरेक्शन. इस पॉइंट को ले लेते हैं. This is our magnetic field, direction of magnetic field, right? तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ, F. वहां क्या है? ऊपर की तरफ. तो what does it mean? Due to this, the coil takes half rotation anti-clockwise. तो इस तरीके से हाफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है. दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. Axis of rotation. That is, now it's showing is clockwise. So due to this, the coil takes half rotation anti-clockwise. After taking half rotation, the split ring S1 will touch the brush B2. S1 जो है ऐसे नीचे से वो B2 को टच करेगा, right? And the split ring S2 touches the brush B1. Then the circuit diagram after half rotation. आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद जो डायग्राम है वो कुछ डिफरेंट हो जाती है, राइट? उसमें क्या होगा? करंट की डायरेक्शन है
then it will change. हाफ रोटेशन के बाद ऑटोमेटिकली इसकी चेंज हो जाएगी. तो सेकंड रोटेशन में क्या होगा? आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड, राइट? व्हेन इट विल कम दिस साइड, तो उनका कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो जाएगा. नाउ द करंट इन द AB, आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर. नाउ द करंट इन द AB which was earlier going in the upward direction, that is A to B, now it will go from B to A, and CD में जाएगा D to C, right? When we will apply again the Fleming's left hand rule to this, then the AB is found to be moving upward. अब AB किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ, and CD will move downward. Again the coil rotates clockwise and comes to its initial position. तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इस कॉइल के अंदर वो रिवर्स हो जाती है बाय द स्प्लिट रिंग्स. तो स्प्लिट रिंग्स का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू जस्ट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट? सो इस तरीके की रोटेशन से जो है उसकी वर्किंग कंटिन्यूअसली चलती रहती है. This is the way that how electric motor works, right? I hope this video is going to help you out to understand this concept.